Hi, this is my little space where I share my real study days, quiet routines, and small efforts as a student. Since morning I was not feeling well, so honestly I could not study the whole day. तबीयत थोड़ी ऑफ थी, एनर्जी भी लो लग रही थी. So in the evening I thought that even if I cannot study, I should at least complete my paintings because they had to be submitted. So I decided to finish all the drawings and keep them ready. बाद में मैं सबको एक साथ पेंट करूँगी. While doing all this quietly, मुझे पता ही नहीं चला और रात के 12 बज गए थे. अभी ये मैंने कलरिंग नहीं की है, अभी इसमें कलरिंग का काम बाकी है. And around 12 I finally sat down to watch a biology lecture. मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर देखा बट आफ्टर दैट मुझे नींद आने लगी. सो आई डिसाइडेड टू स्टॉप देयर एंड वेंट टू स्लीप. In the morning, I woke up around 9:30 and sat down to study right away. सुबह से ही पढ़ने का मन था because from 9th February our final exams are starting. Along with exams, school pressure has suddenly increased a lot. लास्ट मोमेंट पे फाइल सबमिट करनी है, लैब मैनुअल्स कंप्लीट करनी है, पेंटिंग्स फिनिश करनी है एंड प्रैक्टिकल्स भी देने हैं. अब इतना सब एक साथ हो रहा है कि समझ ही नहीं आता कि पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या ये सब सबमिशन कंप्लीट करें. एंड ऑनेस्टली ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी सबमिटेड बिकॉज इन सब के मार्क्स मिलते हैं. सो चाहे प्रेशर हो, मैनेज तो करना ही पड़ेगा अलॉन्ग विद एग्ज़ाम प्रिपरेशन. Around 1 o'clock, I finally sat down to revise physics and decided to cover third chapter because my very first exam is physics. Honestly, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे मैनेज करूँगी and that thought keeps coming back again and again. Chemistry is actually going well and feels kind of under control, but physics is not on track at all right now. That's what makes me more nervous. So instead of panicking, I thought it better to first revise the chapters I already know. कम से कम उन chapters में confidence आ जाए and I don't feel completely blank. For the chapters I don't know properly, I will try to study them in a short and simple way. अगर time मिलता है I will go deeper and if not I will just do my best with whatever time I have. And after studying for around 3 hours, I sat down to work on my lab manual. I have to submit it by the 9th, and honestly, I have only just started. Seeing how much work is left made me realize that I cannot keep postponing it anymore. So instead of thinking about finishing everything in one go, I decided to take it slow and focus on whatever I could complete that day. It's a bit stressful to manage lab manual along with exam preparation, but there's no other option. Exams are coming, submission are also important, and both need to be handled side by side. एंड एट नाइट आई एम नॉट रियली वॉचिंग द लेक्चर्स राइट नाउ. मैं बस उनके नोट्स बना रही हूँ बिकॉज दे फील्स मोर मैनेजेबल एट दिस पॉइंट. दैट्स हाउ माई डे वेंट. टुमारो इज़ अनदर डे एंड आई विल ट्राई अगेन. तब तक के लिए बाय बाय.